the percentage that we got on the exam. But today the system is not like that. We've realized that that one exam is not very decisive. It's not right, not in the favor of the student. It should be student centric because the student may be sick on that day but has done very well through the semester. So we don't give him any credit or her any credit because the student has done well all through the semester. But now today we find that in outcome-based education, we have broken down our 4-year curriculum of whatever the semesters. And within semesters, we have a continuous evaluation process. And this continuous evaluation process is again looked into very seriously because how do I want to evaluate? What do I want to check? What do I want my student to learn? These are the questions I need to ask. So now we are waking up and we are asking all these questions, finding answers to them, and then defining our own syllabus and implementing the syllabus and seeing whether we are going right or wrong. If there are any corrections, we come back and make the corrections. So this is the entire loop that we are following in outcome-based education. That is the beauty of outcome-based education. There's some outcome at the end. Now, supposing even people got very good marks in the exam and they could not secure any job, but somebody who's not done so well in the exam also can get a job. There are so many skills required today in the professional world that you will be assessed on so many different parameters. You may have knowledge, but if you're not able to communicate your knowledge properly, we also realize that such students cannot get a job or they don't have behavioral skills. They show a different attitude there when they go to the interviewer. So we have to make all these corrections so that the child is well prepared to face the world after these 4 years. Now, because if you see, our graduates who are coming out at the end of engineering, are they having a very clear mind or they are confused? Confused. Confused most of the time. So we have to remove their confusion. We have to go on improvising our techniques of teaching so that a child, this student of yours, has spent how many years of his life studying? Maybe if he started off with lower KG, upper KG, you may have 2 years of that. Then first to 10th class, 10 years, 10 plus this 2. Intermediate also 10 plus 2, 12. If we have the back 2 plus, we'll add that later. 12 years plus 4 years of 16. Engineering. That makes it to altogether to 16. 16 years. I mean, low KG, upper KG, if you add up, it's 18 years. 18 years of his life he has put into education. At the end of it, what is he getting? He should be a person with a clear mind, how to face the world. Are we producing such graduates? That is the question. If we are not, like ma'am said, most of the students are confused even today at the end of the 4 years. Can we help them? Can we identify for them what is the right way of telling them or teaching them? Or to guide them? If so, what is that? And that is why educators all over the globe are trying to work out ways to make things better each time. And we are also learning the process as to how this thing is evolving. So this is a continuous process of evolving also because we teachers also don't have a very clear idea sometimes how to impart education. The student also understands the topic, maybe he's not able to say it properly. We also do the same thing, same mistakes sometimes. That's the whole idea. Can we click it? Okay, so yeah, you can come down. I can come down also. Step. Okay. Yes. No. So about OB is a quality improvement framework. Is this working? Yeah, that's working. So that's the first question I'm asking. And to answer that, we have a list of program outcomes that NBA gives us. So instead of we trying to fumble and find out something,
This is what NBA is giving us as a guide. And if you know that NBA has now come up with new program outcomes, they've done a slight modification. And from Jan 25 onwards, the SARS is slightly different. If you want to apply again after 3 years, or 6 years, how many years you've got it? But after that again, you will have to go through this process and a new program outcome happen. How do our students achieve it? Of course, they achieve it by your entire curriculum that you are offering, okay? Which means you have some courses that are being offered in your semesters, okay? So you do all the teaching, learning, and evaluation. So the entire process is there. How well have our students achieved it? So ultimately, when we have finished imparting whatever we wanted to impart, we have to ask ourselves the question whether we have achieved what we wanted to achieve. अभी वही तो बात हो रही थी कि बच्चों को आधे कंफ्यूज हम उनको कंफ्यूज स्टेट में छोड़ना चाह रहे हैं या यू वांट टू मेक देम have clarity of mind. Which supposing I ask him which profession do you want to choose? नहीं मालूम को आएंगे. Which company do you want to work in? कैंपस प्लेसमेंट्स आते वो कंपनी हाउस में बैठूंगी मैं. क्लैरिटी है कितनी पैकेज होना पे कितनी होना आपको अब जो भी है वो स्टैंडर्ड चल रहा ना भी है ना मिलते यार बहुत है मेरे को बात होते नहीं मेरे को वो उन लोगों को मिल रहे थे भाई बहुत बता पैकेज इतना बढ़ के है वहाँ 1 लाख है 2 लाख है मैं उसके लिए एम कर रहा हूँ एक दो बोलते हैं most of the people they don't know how much pay they want if the interview asks them also how much pay do you want can they answer with confidence do they know how much worth they are in the market do they know that for me this job is well suited I have all the skills to do this job if I am a carpenter and I know how to make this table then that carpenter will do this job only he will say मैं आपका टेबल बनाऊंगा आपका बेड बनाऊंगा आपका चेयर बनाऊंगा उसको इतनी क्लैरिटी है लेकिन हमारे इंजीनियर बच्चे जो निकल रहे हैं उनको अगर आप पूछेंगे कि what type of job do you want to do what skills do you possess they have to be able to answer and say I possess these skills this industry needs it and I'm aiming at these companies which need my skills I can offer them solutions so that is the kind of student I want to produce so we have to do assessment of the attainment of the COs and POs then finally we have to check after the attainments have been calculated whether we achieved our goal okay we set out with some goal that they would become so and so in the program outcomes we gave a big list we said we want them to do this be able to do this in COs we said so all that is done or not if it is not done then what should we do should we keep quiet no then we have to take a corrective action where can the correction go in the syllabus outcomes of course are not achieved so where should the problem be either in the syllabus or the teaching learning process okay your teaching learning process is not correct you set out to make him an engineer who is able to write big programs but he can't even write a small program he is memorizing and writing the program many kids are doing that they are even memorizing those programs for the exam you have some 12 experiments you will memorize and write them so is the purpose served no right so we have to do this very important we call it as gap analysis we have to find the gaps where we are going wrong now just now Tahmina was traveling with me in the car and she was asking me a question she said ma'am वो जो outcomes देते ना हमको NBA वाले बोले वो गलत है वो ठीक नहीं है हम सही कर सकते क्या मेरे मन का डाउट था हम वो NBA के जो outcomes हम लोग लिखे थे वो ठीक करते थे because your outcomes are being you are now autonomous or not No. you are still affiliated okay तो autonomy नहीं है अभी आपको तो affiliation है तो मतलब आपको university will define your syllabus
Okay. So now you are treating the university as God. Mazala. है ना? Yes ना? Yes. तो इसीलिए आप लोग चुप बैठे हैं ना, जो गलत भी करे तो आप वही इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. मतलब वो माज़ाल्लाह कुरान के हुरूफ बन गया, आप बदल नहीं सकते उसको. ऐसा है? ऐसा बिल्कुल नहीं है. No. Please take this out of your mind that the university is not a dictator. If they give you some course outcomes and they tell you these are the course outcomes, you find they're not appropriate, then you have every right to change the course outcomes to suit the syllabus. Or you write some more course outcomes and add something more to the syllabus. Nothing lost in teaching more to your student. Or tuning it to the way your student understands. And then you have to write, the gap is not closing there. You do the change, then you write to the board of studies. You are all members in that board, aren't you? At least some of you are there. Yes. So you have a word. You have to go back and tell them that this course outcome, these course outcomes are not designed appropriately. Why? This is the justification. And we would like a change in this. And we are suggesting these changes. Please write a formal letter. Please raise your voice during the board of studies meeting saying that the course outcome should have been like this. That's why they're putting you on the board of studies. Do you understand that? So, you are affiliated does not mean that you can accept blindly everything that's going on. Okay. We are in a country where we have freedom of everything. Okay. And not for the university, why do you want to just keep quiet? You have the provision. Okay. Even if NBA is not doing something right, you can write and say that NBA is not doing something right. You know what happened to NAC assessors, what they have done. So always we have a right to raise our voice. Okay? Please make the best use of that. So finally you have to do that with you have to close the loop, means you can write to the board of studies, you can do all that, you can change the CEOs, everything is there in your hands now. Okay? Now please go to the next slide. Okay, I have this in mind. Okay, these are the 12 attributes. I think all of you are very, very familiar with these attributes. The first one is engineering knowledge has to be given to the child, which is math, science, or engineering knowledge. Then problem analysis, identify, formulate, analyze complex engineering problems. Design, development of solutions. Conduct investigations of complex problems. Analyze and interpret data. Modern tool usage. Engineer and society. Environment and sustainability. Ethics. Individual and teamwork. Communication. Project management and finance. Lifelong learning. I've just put some colors to this. Okay. If you can observe here, I put knowledge where you're acquiring knowledge, domain knowledge or any other knowledge. Okay. That I put in red. Okay. This is basically your subject knowledge or some other allied subject knowledge. Okay. Skills are learning some tools, learning to work with others, learning to work as a member of a team, individual member of a team. When you ask people to give a seminar presentation, 4 people are there. Only one will be speaking or 2 will be speaking. 2 will be dummies there. So everybody has to have an identified responsibility, identified role. Are they doing that? Is the teacher taking care of that? Some teacher is assigned, no? So basically the teacher has to take care that everybody is given some particular responsibility to do this part of the project, that part of the project, and make them speak up for their work. This is very important. And when they work as a team, people don't know how to behave in a team. Sometimes some people want to just work themselves. They don't want to listen to others' ideas. So the faculty has to correct them. This is another kind of learning. Because when they go to company, will have a hard time. The attitude is the major problem. Most of the recruiters are saying the attitude of the students is not good. If you have to negotiate with somebody
Some idea, you have some ideas, they have some ideas. You have to negotiate and say, my idea is better than yours, or why we should do it this way. Or can you do it both ways? सब उसको मालूम था, लेकिन स्टेज पे जाके fear, stage fear है उसको. He's not able to talk. So you have to help him overcome that. Project management and finance. Why do we need project management and finance? Do we really need that? What is your thing? Anything they want, they have put here. वो तो डाल दिए. हमको क्या अच्छा लग रहा नहीं, ठीक लग रहा नहीं लग रहा. Yes, every piece of work is a project, and so you should know how to do a project. And of course, when you go and do a job out there, okay, you'll be doing some project, and soon you will go up the ladder, and you want to manage some small group of 4 people first, maybe 10 people next. क्या बाबा? नहीं बाबा, I am fine. नहीं तो मैं ले लूँगी आप. Project management and finance. So project, when you go and do projects in the company or wherever you work, there, as soon as you manage a small group of 4 people or 5 people or 10 people, you don't know how to do management, how to tell somebody how to do the work. That's also a skill. How to take the work from them, how to encourage them to do the work. Okay? Project management and finance. And at that time, you'll have to also, now we'll ask, every time in NBA, they'll ask you, sorry, do you have autonomy, financial autonomy? Sorry. The heads of the department, they're asked this question, do you have financial autonomy? Do you give your budget, department budget? Then do you just say how much did you spend? How much did you, what did you do? What happened to the remaining amount that you did not spend? Next year, how much money did you get? How did you modify your budget? Budget? वो मेरे को कैसा माना था, मैं इंजीनियरिंग पढ़ाती हूँ, मेरे को बजट कैसा पूछा ना, बोलते ना ये कॉमन प्रॉब्लम है. जो हेड बन जाता है, that person does not know how to do budgeting, how to write, what the department needs, where the funding has to be spent. If it is not spent, what is the reason? Next year funding क्या करना? Your management will again cut off some money. Didn't spend last year, didn't buy any books, didn't do any, use any resources. They'll cut off your funding. अरे हमारा डिपार्टमेंट बहुत कम फंडिंग दे रहे हैं लोग. यू आर द कॉज फॉर दैट. तो ये सब चीज़ें इवन इंडस्ट्री में होती है और आपको भी वही फेस करना पड़ता है. तो थोड़ी बहुत जानकारी यू हैव टू हैव अबाउट दीज फील्ड्स, ओके, सो दैट यू कैन राइट योर ओन बजट, यू कैन अंडरस्टैंड फाइनेंसेस. थोड़ा बहुत उतनी तो नॉलेज, बेसिक नॉलेज रहना चाहिए. लाइफ लॉन्ग लर्निंग. व्हाट इज दिस लाइफ लॉन्ग लर्निंग? कंटिन्यूसली अपडेटिंग, हायर स्टडीज. हाँ, बोलते जाइए. Continuously updating, higher studies. So I have to be a learner throughout. ये सोचना चाहिए हमको, सोच पहले रहना चाहिए. ठीक है, सोच है. Learn from the experiences. Yeah. Now, as you see here, we have put this as one of the attributes that the child should possess, your student should possess. How do you make him a lifelong learner? सोचो तुम lifelong learner रहेंगे lifetime में. मैडम बोले, हाँ सोचता हूँ मैडम, सोचता रहता हूँ मैं बनूंगा लाइफलॉन्ग लर्नर. कोई बोले आउटकम होना, आउटकम होना बेटा, आउटकम होना, आउटकम करेंगे. ऐसे तो नहीं होता ना. क्या होता है लाइफ लॉन्ग लर्निंग? मतलब बच्चा खुद से पढ़ के समझ के काम करना चाहिए. लाइफ लॉन्ग लर्निंग अब आपने आज से, जब सपोजिंग आप व्हेन यू स्टार्ट ऑफ, ओके, I was not interested in reading novels. Then my father told me, why don't you read these novels? These are classic novels. This is the storyline. There's a lot of learning from the novels. You read one, you see for yourself. Then I opened a book. I read a couple of pages. Then I understood. I didn't understand some words. He said, make a note, find out from the dictionary what those words mean. Then I learned on my own. Then my English started improving. That is the assignment my dad gave me. That's how I could improve my English. Self-learning and experiential Self-learning. But you should be put in that position to learn. That means, for the student, how will you make him do that?
एक्सपीरियंस से सीखना बोलता हो, मैं एक्सपीरियंस पूरा प्लेग्राउंड में घूम रहा था, मैं क्लासेस बंक करके घूम रहा था, मैं मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था, बहुत मजा आया मेरे को ग्राउंड में। बच्चे तो वही चाहते हैं ना, कौन चाहता है क्लासरूम में बंदे बैठे रहना चेयर से। हम ही लोग नहीं बैठ सकते, देखो वो सब फिजिट कर रहे हैं। बैठ सकते हैं आप लोग, थोड़ी देर बाद आप बोलेंगे क्या बिठा के रख दिया हमको। आप लोग, मुझे मालूम है, आई कैन नॉट सिट लाइक दैट, सो आई नो द प्रॉब्लम। इट इज वेरी डिफिकल्ट। आजकल के बच्चों को कितनी देर बिठा सकते हैं हम लोग? नहीं बिठा सकते। तो आप उन लोगों को ऐसे, उन लोगों को काम देना है। लाइफ लॉन्ग लर्निंग मतलब आप खुद से पढ़ के syllabus में bas, if you watch some syllabi, in that at the end there will be some topics. Topics will be there for presentation, case study, mini project रख देते हैं. That is where the learning really happens. If you give him some topics to present at the end, you do all the lecturing. End में कोई थोड़ा topics उन लोगों के लिए रखिए, उन लोगों के लिए प्रोजेक्ट रखिए, मिनी प्रोजेक्ट रखिए, उनको करने दीजिए। उसी से वो लोग ये सब पूरा सीखेंगे, कैसे वर्क करना एक साथ कैसे करेंगे। लाइफ लॉन्ग लर्निंग, उनको आदत पड़ जाएंगे, सीखना है, सीखने का वो जोश पैदा हो जाएगा। मैं खुद से पढ़ सकता हूँ, वो हिम्मत नहीं आती कि मैं खुद से कर सकता हूँ। आई ऑलवेज यूज्ड टू से समबडी इज टू कम फर्स्ट इन माय क्लास। नहीं डैड, वो अनबीटेबल है, वो तो फर्स्ट आती है हमेशा। कोई अनबीटेबल नहीं है, यू कैन ऑल्सो कम फर्स्ट, यू हैव टू डू दिस दिस दिस। सो एक गाइड है हमारे सामने, गाइड बताते जा रहा है हमको। Nobody is unbeatable. So we have to give that confidence to the student. How do we do that? We said, chalo, give us a top. I'm giving a topic. उसमें आप presentation दो. I'll help you how to do it. Do a project. Finish it. नहीं finish हो रहा, कहाँ problem आ रहा, क्यों problem आ रहा, so correct करिए आप। तो आपके बच्चे भी कहीं पढ़ने जाते ना, you want teachers to do same thing to your children, no? ठीक से नहीं पढ़ाते हो, स्कूल भेज दिए, वो बेकार के टीचर है, वो सब बोलते हैं। लेकिन हम भी तो वही है ना, हम किसी के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो हम यहाँ ठीक काम करेंगे, वहां वो लोग ठीक काम करेंगे। तो ये सब लाइफ लॉन्ग लर्निंग मतलब द स्टूडेंट हैज टू डू समथिंग ऑन देयर ओन, प्रैक्टिकली और थियोरेटिकली ऑल्सो। एक पेपर दिए पढ़ के और बोले बच्चा कितना समझा पेपर में, 20% समझ रहा, 40% समझ रहा, उसकी अंडरस्टैंडिंग कहाँ तक पहुंची। आप भी असेसमेंट कर रहे हैं कि मैं इतना पढ़ाने के बाद बच्चा ये पेपर को 40% समझ सकता, 20% समझ सकता, लेकिन 80% तक नहीं समझ सकता। मतलब मैं जो पढ़ाई उसमें थोड़े टॉपिक्स मिसिंग है, या मैं जो पढ़ाई वो बहुत उसको समझ में नहीं आ रहा है इन लोगों को, तो कुछ और कुछ सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। यू विल ऑल्सो गेट एन आइडिया, अंडरस्टैंड? दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्किल। सो नाउ knowledge is there, skills, these are all skills in the green. Engineer in society, how you work with the society, environment and sustainability, ethics, साथ में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, असाइनमेंट दे रहे हैं, आपको कॉपी करके दे रहा है सीनियर्स का, एथिकली इनकरेक्ट है। अगर आप बाहर के यूनिवर्सिटीज में पढ़े हैं तो वहाँ पे आपको एथिक्स की पॉलिसी होती है, बोल देता है कि अगर आपका डुप्लीकेट निकलेगा तो आपको कोर्स से निकाल देंगे, और वो सब आइडेंटिफाई हो जाता है हम लोग का। तो हम लोग प्रोजेक्ट भी ऐसे देना चाहिए, प्रॉब्लम्स ऐसे देना चाहिए कि उसकी एथिक्स को भी हम समझ सकें। When you go to the class, you are a role model for them. So when you are speaking to them, you are not just talking to them about the subject, you're talking to them about your own experiences, how you should mold them. Okay, how you want to be molded when you were a child or you were a student. Now you must do the same thing for that child. During the course of their teaching, you should tell them something about ethics. If somebody is saying in the class, in my class, some student said, "No, madam, cheating चल रहा, madam, बहुत जगह चलता है, cheating सब चल रहा है." उसको क्या हैंडल करना, कैसे हैंडल करना, तो ये सब टीचर्स के लिए भी एक चैलेंज है कि हम लोग कैसे उसको एथिकली करेक्ट करेंगे। Okay, so basically these 12 things were the graduate attributes which were available, but now NB has reduced it to 11, one shot. What they have done is they have combined these two, engineer and society और environment sustainability को दोनों को मिला के they have condensed it into one, engineer and the world बोल रहे हैं। तब जो नया सार भरेंगे आप लोग, उसमें 12 के बजाय 11 रहेंगे। मतलब आपके जो बोर्ड स्टडीज जब न्यू आएगा करिकुलम, अब वो करिकुलम इस लिहाज से होगा, आपकी COPO मैपिंग इस लिहाज से होंगी। ओके, सो एवरीथिंग इज गोइंग टू चेंज।
I'm not telling about the new policy. Again, you'll have to have a workshop on that. It's a complete new idea again. There are a lot of things we have to discuss in that again. So I'll leave you with some pointers where you can learn also. Of course, you know what are course outcomes, all of you? और उसी में confusion है, ठीक है, मालूम है? State what a student on successful completion of the course earning a pass grade credit is able to perform, demonstrate, blah blah. पढ़ लीजिए आप लोग. The following things. Okay, that is course outcome. Okay. Now, to define the course outcomes, you should also be aware of what we call the Bloom's taxonomy. All of you are aware? Okay. तो ये Bloom's taxonomy में कितने levels हैं? 6 levels हैं. तो हम लोग अब जो क्वेश्चन पेपर सेटिंग करते हैं तो कितने लेवल्स ले सकते हैं इसमें से? 5, 6, 4, 2, 1 कितने ले सकते हैं हम लोग? 4 to 5 ले सकते हैं. कौन से 4 to 5 लेंगे हम? एक्सेप्ट क्रिएट्स बाकी के पूरे ले सकते हैं. और हाँ, एनालाइज अप्लाई तक ले सकते हैं. Evaluate also if you want. Okay? Now, remembering मतलब क्या होता है ये? Recall. Definition हो, चाहे वो आपका 1 line आंसर हो, चाहे एक इक्वेशन लिखना हो, जो भी हो, इट इज अ रिकॉल. बेसिकली मेमोरी में है, उसको बस रिकॉल करना है उसको. अंडरस्टैंड थोड़ा समझ के भी करना है. ब्लॉक डायग्राम डालना है तो कितने ब्लॉक्स हैं, फिर वो कनेक्ट कैसे करना, वो कैसा फ्लो हो रहा है, डेटा इंफॉर्मेशन जो भी आप डाल रहे हैं, या वो सब दिखाना पड़ेगा. अप्लाई जो भी आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हुई है, फिर उसके पर आप एप्लीकेशन बनाएंगे. एनालाइज, break down the information into component parts and study that properly. Evaluate, judging the value of information and ideas. Combining parts to make a whole new world. Now, some people said that we could go up to evaluate, some said up to analyze. Well, I think this is a slide. There is a great professor, Professor Muthu Krishnan. He's from IIT Chennai. He's retired, but his slides are very beautiful slides on the NBA website. If you want to go through, you please, I'll also click and show you the NBA website. All of us are learning from there only. Nothing new that I'm talking. I'm also learning from some place and I'm telling you all these things. Okay. So basically, you will, when you have fixed hour exams, you can go only up to these 4 levels. And if you want to do projects or something, you can use this level and plus these 2 levels. Okay. So I always give this example because I found that a very nice example. I was studying in the US and we were given several projects, and one of the most interesting projects, the first project that I did in the US was an operating system course project. Okay? I don't know if all of you are computer science or you understand some computer science. Operating system समझते ना सब लोग? हाँ, तो operating system का एक course होता है computer science में. I was undergoing that course, and the professor was Jim Kuros, वो जो networking की book लिखे ना, वो operating system पे पढ़ाते थे. The operating system course में project दिए वो, build a mini shell. I had gone, this is way back in 89, and that time वहाँ के resources बहुत powerful थे. यहाँ पे हमारे पास अभी mouse आया था, हम mouse देख के कहते हैं इसको mouse बोलते बोलते, तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा और advanced काफी difference था. अब जैसा the difference is shrinking, the whole world is shrinking now, but it was not the case at that time. So when I went there, they said, okay, you have to do a project. I said, well, इनको चलो project है करेंगे, how to do it, mini shell बनाना है, study करे everything, एक mini shell बना के दे दिया. लेकिन प्रोफेसर ने काफी कुछ माइनसेस डाल दिया, माइनस मार्क्स भी होते थे, नेगेटिव, ये ठीक नहीं है, माइनस माइनस माइनस. और वहाँ पे और एक बात होती थी, सपोजिंग असाइनमेंट 100 मार्क्स का तो 120 भी मिलते थे बच्चों को. मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट के लिए भी 20 मार्क्स का एक अलग क्वेश्चन होता था. कोई 100 मार्क्स का फुल करे बाद और करना है कुछ, तो उसको 20 मार्क्स का और एक क्वेश्चन दिया जाता था. तो हम तो वो 20 मार्क्स का नहीं छुए, लेकिन 100 मार्क्स का कर लिए, करके बहुत खुश हो गए, 100 में 100 तो आएंगे अपने को. वो जाके वो जब पेपर वापस मिला, तो आई फाउंड इन माई पेपर दैट द प्रोफेसर
had deducted marks. I went to the professor, I went to my peers, I said, what happened here? I got so much, I got this. जो IIT के लड़के थे, they were a little smarter than us. उनका जब देखे हम solution, तो मिनिशियल डिजाइन कर रहे तो that boy एक डिजाइन प्रोजेक्ट के साथ डिजाइन डॉक्यूमेंट देना मस्त था वो. How did you design बोल के? वो डिजाइन डॉक्यूमेंट, आपका कोड, आपका आउटपुट, everything had to be submitted. The design document we wrote whatever we did. What they have done is they designed a mini shell using two different approaches. Okay, maybe a serial approach and a parallel approach, forking karke wo karke, and then debated which of the two approaches is better. Then they said we are choosing this approach, and then they solved, and then they submitted the design, followed by implementation, followed by output. So they have done a thorough work of the project. Whereas I did one way of doing it. I never thought कि दूसरा तरीका होता है क्या. I never gave a thought to it. It didn't occur to me also. So I was so lame at that time. So here, this evaluate is a little higher level evaluate. In our questions, you will say evaluate some expression. That is not this evaluate. Okay. In the question when you give evaluate this expression, वो आप पढ़ा के उसको evaluate करो बोल रहे हैं. वो understanding का level है. ये evaluate मतलब आप दो तीन solutions बना रहे हैं, build कर रहे हैं आप खुद. आप दोनों को tear apart करेंगे. You will justify, you will vote in favor of one or the other, and then you will take it forward. Okay. So this evaluate is a slightly higher level evaluate. Not the evaluate in expression or evaluate something which is at a lower level. It is not going to come here. Many people I see they write the question evaluate. क्योंकि evaluate word आया उसको ये level देते हैं, which is incorrect. Please don't do that. This evaluation is a different kind of evaluation. Then creating means creating a new idea out of that. Okay. मुझे एक नया ही बना दिया उससे. Then इसका और एक तरीका कोई नहीं किया अब तक मैं कुछ कर रहा हूँ. तो course projects, mini projects, minor projects, capstone projects, all this can involve these. Fixed hour examination, you will only go with the bottom four. Okay. Now all this is required because when you're framing the course outcomes, at the end of the course you are asking him a question. How are you evaluating him? You are asking him a question. So at the end of the course, he should be able to apply the knowledge. Then you can ask him a question and apply. If you say he has to analyze some things, if you write in the course outcomes, then you can ask a question here, analyze करो बोल के. अगर if your course outcomes ही आप analyze नहीं लिखे हैं, outcome आपका है नहीं, उसको analyze कराना सिखाना नहीं है, फिर आप question में कैसे पूछते हैं analyze? So these two are linked, course outcomes and your question paper setting. Both are very closely linked. So plan your course and think, I want to ask him these kinds of questions in the exam. That means I have to prepare him. That means मेरा outcome में डालूंगी मैं कि मैं उसको एक concept सिखाऊंगी, concepts को फिर build करा के उसका applications कराऊंगी, उसको फिर analyze करना होगा जो भी हम ये उसको कैसा ये solution सही है नहीं है, कुछ bug है नहीं है, whatever you want to do. Okay, so your course outcomes and this will be linked. Now what we are talking about is this direct assessment things. For assessment you also have indirect assessment needs. I am not touching upon this. Okay, only we are speaking about the direct assessment techniques. Okay, so don't forget that there are some more indirect assessment tools. Okay, now this is what I picked up from Dr. Maniza, and I am taking your own question paper and showing you your understanding of Bloom's taxonomy. Okay, so don't mind my showing this. It's not to belittle anybody. It's just to educate you if you are not aware. Okay, if some you are aware, well and good. Okay. Now differentiate between list and data frames. Some are on CSE, some from IT, and some from mechanical, civil, and EEE. EC have not given, she said, or something like that. So whoever have given, I have taken some questions from here and there. Differentiate between list and data frames in R with examples. What do you think this would be? Any CSIT people? What level could this be? हाँ L to understand हो जाए. चलिए देखते हैं इसको क्लिक करना पड़ेगा हमको.
आप देखिए क्या लेवल दिए, लास्ट क्वेश्चन है वो, डिफरेंशिएट बिटवीन लिस्ट एंड डेटा फ्रेम्स, व्हाट लेवल हैव यू गिवन? L4, L4 है वो लेवल, L4 लेवल का क्वेश्चन नहीं है ना। क्या एनालिसिस क्या पढ़ा है उसमें, आप पढ़ाई क्लास में पढ़ाए होंगे ना ये दो चीजें तो, और डिफरेंस बोले ही होंगे, तो कुछ एनालिसिस नहीं कर रहा बच्चा पे, लेकिन L4 दे दिया आपने। What is this question? I'll deal with it, okay? मैं कर लेता हूँ। इसका क्या है? Distinguish between binary search and avial tree. L2 लेवल ही होगा, L2 लेवल होगा ना। देखते हैं ये लोग क्या लिखते हैं। आप ऐसे हट गए तो मैं थोड़ा टेक ओवर कर लेती हूँ। Okay, distinguish between binary search and avial tree is in this paper. Can you see the paper? Can you read the writing? Or should I make it bigger? Visible. Okay. अब यहाँ पे कोई लेवल ही नहीं दिया इन्होंने। नहीं, नीचे होगा मैं ब्लूम्स। हाँ, नीचे देखेंगे, चलिए आइए। ब्लूम स्कोर क्या दिया लेवल? क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 2 6 क्या है वो? 6 है 3 है? L3 into 2 क्यों कर रहे हैं वो, क्या कर रहे हैं वो भी समझ नहीं आ रहा। वो क्या मल्टीप्लिकेशन चल रही है वो भी समझ में नहीं आया, कुछ मल्टीप्लिकेशन भी कर रहे हैं वहाँ पे। वो मल्टीप्लिकेशन का into 2 क्यों कर दिया आपने? Actually, ma'am, the Bloom's taxonomy, those 6 were given on a scale of 0 to 10. So 0 to 2, 2 to 4, if level 1, level 2, like that. So if that was Who defined the 0 to 10 scale? That was defined in 10. मतलब आप नया at the college level. नया स्कोरिंग बनाए? नहीं, at the college level it was defined. वो कॉलेज नया स्कोरिंग स्कीम बनाया? नहीं ma'am, just to get that. नहीं बना सकते हैं आप, बनाइए, बना के बताइए। है तो कुछ स्कीम बताइए क्या है? ये हम ब्लूम्स नहीं मानते, फिर ब्लूम्स का नाम हटाओ। नहीं उधर ब्लूम स्कोर नहीं डालना, MJ कॉलेज स्कोरिंग बोल के डालिए आप। आप उसको फाइनल अपना नाम दे सकते हैं आप। मैं अपना स्कोरिंग बनाई, मैं ये देख कर रही हूँ, लेकिन आप ब्लूम्स का नाम लगा के आप दूसरा स्कोर नहीं दे सकते। That is not acceptable to me. Okay? So if NBA comes, this is what they will observe, that how far you are understanding that. Okay. Now this is again IT computer, some first मैं IT computer science डाली, sorry मैं वही computer science क्यों करके first इसी को निकाल ली, but your other questions are also coming, other department people. Derive an MST from the following graph using Prim's algorithm. कौन सा लेवल है इसका? कोई L2 कोई L3 बोल रहा? L3 अप्लाई करें क्योंकि एक प्रॉब्लम दिया गया है, तो प्रिम्स पढ़ लिए आप लोग, उसको अंडरस्टैंड कर लिए, अब उसको अप्लाई कर रहे हैं आप लोग, तो मोर लाइकली L3 होना चाहिए। देखते हैं क्या कर रहे हैं आप लोग। L2 है, अंडरस्टैंड, इसको अंडरस्टैंड तो करना पड़ेगा, लेकिन उसका नेक्स्ट लेवल क्या है? अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अंडरस्टैंड तक लिख दिया आप, अंडरस्टैंड तो जरूरी है, लेकिन उसके साथ अप्लाई भी होना चाहिए। List and discuss the logical clocks in distributed systems. क्लास में पढ़ाते लॉजिकल क्लॉक, सिलेबस में है लॉजिकल क्लॉक, कौन पढ़ा रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स है ना सिलेबस में, तो यू वुड हैव टॉट, आई एम अज्यूमिंग, लॉजिकल क्लॉक क्या होता। लिस्ट एंड डिस्कस द लॉजिकल क्लॉक्स इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, आप पढ़ा चुके, अब क्या लेवल पे आना? आई एम वन ऑफ यू। लिस्ट एंड डिस्कस लॉजिकल क्लॉक्स को L3 दे रहे हैं लोग। कुछ एप्लीकेशन है इसमें, अप्लाई कर रहे हैं क्या? जो पढ़ाए से वही आप आगे प्रोड्यूस करो, बोल समझ के लिख दो बोल रहे हैं, उसने कर रहे हैं आप लोग। Write the grammar and parse tree to parse the following sentence.
द गर्ल सॉ अ मैन इन द पार्क विद अ कैट। ये क्या लेवल हो सकता है? L3 होता है? L3 देखते हैं L3 लिख रहे हैं क्या लिख रहे हैं। L2 डाले उसको। तो थोड़ा आप लोगों को कंफ्यूजन है अंडरस्टैंड में और अप्लाई में। अप्लाई मतलब वो समझ के अब उसको सेंटेंस के ऊपर लगाना है, उसको कैसा कर रहा है। तो ये मोर अप्लाई की तरफ होगा रादर देन अंडरस्टैंड। आउटलाइन अबाउट इटरेटिव डीपनिंग ए स्टार। ये क्वेश्चन का मतलब पहले समझ में आया आपको? क्वेश्चन का मतलब क्या है? आउटलाइन अबाउट iterative deepening is sir. Now see, the student has only how much time to write the exam? 1 hour. So he has to spend 10 minutes on understanding a question only. कि आउटलाइन बोलते मैं एल्गोरिथम लिखूं या आइडिया लिखूं, क्या लिखूं समझ में नहीं आ रहा बच्चे का। मैं सोचता अरे मैं आइडिया लिख के छोड़ा तो मैं मार्क्स कट कर लेते ना, एल्गोरिथम पूरा लिखे तो देते शायद। फिर एनालिसिस भी करना क्या मैं उसका इटरेटिव डीपनिंग का। आउटलाइन करो बोला, आउटलाइन बोलते क्या मतलब आ रहा, कुछ समझ में आ रहा आउटलाइन का? आप स्टूडेंट्स को डाउट में नहीं डाल सकते क्योंकि आप उसको टाइम बाउंड है वो। व्हेन यू आंसर ओके यू हैव टू सी कि आप समझ गए क्या एग्जैक्टली क्या सोल्यूशन चाह रहे हैं आप उससे। इसलिए की देना, की में आप जो सोल्यूशन लिखते ना वापस पलट के क्वेश्चन पे देखना, यही पूछ रही हूँ क्या मैं, यही पूछ रहा हूँ क्या मैं। इफ नॉट चेंज द वर्डिंग। लेट्स सी आउटलाइन अबाउट इटरेटिव डीपनिंग स्टाइल L1 लेवल है उनका। तो उनका मतलब आइडिया क्या है पूछना चाह रहे हैं शायद या क्या है। मगर अब बच्चा जो है ही इज कंफ्यूज। वो 1 मार्क क्वेश्चन है मगर मैं पूरा नहीं लिखा तो मैडम वो 2 मार्क्स क्वेश्चन 2 मार्क्स काट देंगे मेरे को तो पूरा मालूम है लिखता हूँ, उन्हें 1 घंटा उसमें निकाल देता। वो बच्चों को आइडिया नहीं है। सो यू हैव टू बी मोर स्टूडेंट फ्रेंडली। ओके चलिए स्टेट एंड एक्सप्लेन स्टेप्स ऑफ थेवेनिन्स थ्योरम। इलेक्ट्रिकल के हैं शायद, इलेक्ट्रिकल L2। चलिए देखते हैं ये लोग क्या बोलते हैं। स्टेट थेवेनिन्स थ्योरम यहाँ पे नहीं दिया, नीचे दे रहे हैं लोग शायद। कौन सा क्वेश्चन है? 4A है। 4A ब्लूम स्कोर 4 है। 4 है। But I can't accept a new score. I'm saying your scoring has to be Bloom's means 6 नहीं दिखना मेरे को फिर। अभी कभी आप लोग वैसा डाले ना, अभी 1 2 3 डाले ना, अभी CSE वाले ट्रिपल वाले 6 डाल दे रहे हैं। क्यों ऐसा डिस्पैरिटी क्यों है डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट? Derive expression for RMS value of sinusoidal wave। कितना क्या है इसका? कोई इलेक्ट्रिकल के है नहीं है क्लास में है, अब फिर कोई आवाज ही नहीं निकल रहा है। क्या लेवल है मैडम? L2 रहता है ना मैडम? चलो देखते हैं आपको L2 सही निकलता है क्या। स्टेट एंड एक्सप्लेन थेवेनिन्स थ्योरम 5B 6 3 भी होता हो। डेराइव एक्सप्रेशन फॉर आरएमएस वैल्यू ऑफ साइनसॉइडल वेव, वो एक्सप्रेशन भी आप ही सिखाते क्लास में साइनसॉइडल वेव का। आई डोंट थिंक वो नया प्रॉब्लम है, वो सिलेबस में रहता है वो ना, डायरेक्टली उतारने का है वो क्वेश्चन। आई मीन हमारे पास जो हम जो पढ़े थे जब का कहानी बोल रही हूँ, आई डोंट नो आपका सिलेबस में क्या है। चलिए दिस इज फॉर मैकेनिकल आई थिंक। सेलेक्टर, अच्छा सेलेक्टर स्विचेस में ही अभी डिस्क्राइब सेलेक्टर स्विचेस एंड लिमिट स्विचेस यूज्ड इन इलेक्ट्रिक ड्राइव ऑपरेशन। क्या है ये लेवल? L2 है ना? आप इलेक्ट्रिकल वाले बोलिए भाई, इलेक्ट्रिकल नहीं है यहाँ पे तो कंट्रोल ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइव लिखा है सब्जेक्ट का नाम। आप लोगों के अंदर ही आता है। आप इट इज ट्रिपल ई डिपार्टमेंट EED डिपार्टमेंट। नहीं भी तो ये अपन पढ़ के ऐसा इंजीनियरिंग में नहीं पढ़े। हाँ? क्या लेवल में पढ़ गए अपन?
ओके, कहाँ है वो क्वेश्चन? L3 डाले इसको, अप्लाई क्या करें इसको, मुझे अप्लाई नहीं करें, L2 होना चाहिए ना। तो ये भी देखिए थोड़ा गलती कर दिया यहाँ पर। अब यहाँ पे फिर ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, ब्लूम स्कोर में यहाँ पे जाके 6 को 6 दे दिए। हाँ, इंटू 2 का करिए, टेबल ही में कुछ समझ में नहीं आ रहा, प्लीज डोंट अडॉप्ट दैट टेबल, माय सजेशन इज दैट, unless you have a justification for that. Differentiate between cold working and hot working. Mechanical, I think this is mechanical. L2 लेवल है इसका, देखते हैं क्या लिखे हैं इन लोग। कहाँ है वो क्वेश्चन? L4 लिख दिया उसको, L4 हो सकता। चलिए 11 क्वेश्चन, summarize the processes underlying plastic deformation. अंडरस्टैंडिंग बोल रहे हैं मैडम, मेरे बाजू बैठ के बोलते जाए आंसर्स। आप मैकेनिकल के हैं? अच्छा, ग्लैड टू मीट यू। देखते हैं इसका क्या लिखे हैं इन लोगों ने। समराइज द प्रोसेस अंडरलाइन डिफॉर्मेशन, L3 लेवल दे रहे हैं। तो मतलब कुछ तो लिखना है, लेवल लिख दे रहे हैं बस, मगर क्यों? इतनी आसान चीज है, कोई भी सही सही लिख सकता है इसको, इतना कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है। थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग है या बस मेमोराइज रिकॉल में कोई होता, कोई एप्लीकेशन है, ये डाउट कर सकते हैं, मगर तो सोचे तो वो भी समझ में आता है। What is scientific management? Explain the principles of scientific management. If they have taught this topic, then it is just an understanding. It is not a research topic that they're giving them. It is a, I'm understanding they're teaching in the class. And the answer, let's see what's that. L1 दे रहे हो ना, L दिया यहाँ पर खाली। आप fill in the blanks, जो चाहे लिख लो, fill in the blanks। नहीं, नीचे दे रहे हो ना, L लिख के नीचे दे रहे हो। What is scientific management? क्या 4A 6 दिए, L3, तो वहाँ L डाल के फिर 6 डाले, तो जो चाहे फॉर्मेट फॉलो कर लेना आपका। ऐसा L लिख दे के छोड़ देंगे, फिर नीचे लिख देंगे कुछ, तो ऐसा अब आप, आपकी सेटिंग ऐसी चल रही है आजकल। आपके पास ऑडिटिंग नहीं होता, मालूम होता, एकेडमिक ऑडिट बंद है आपके पास। ये क्वेश्चन है, क्या बोलिए, जल्दी जल्दी पढ़िए। L3 है, अप्लाई कर रहे हैं, देखते हैं अप्लाई कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। यहाँ तो लेवल नहीं दिया ना, कौन सा क्वेश्चन है ये? 4th क्वेश्चन है, 4th का 5 दिए ना। अब 5 को हाफ करके 2.5 लगाना क्या? ये 5 लेवल कहाँ से आया? 5 को फिर हाफ कर तो 2.5 कैसा होता? ये सिविल इंजीनियर्स का है, सिविल इंजीनियर्स है कोई? सर आपके डिपार्टमेंट में बताइए थोड़ा कैसे करना है ये। और एक सिविल का क्वेश्चन आ गया, L2 बोल रहे हैं सर, सही बोल रहे हैं ना? सिविल के प्रोफेसर है ना यहाँ पे अपने? ठीक है सर, L2 L2। चलिए देखते हैं क्या लिखते हैं इसमें। कहाँ है सर? सॉइल मैकेनिक्स में है वो क्वेश्चन, यहाँ है, पूरे एक साथ दिए हुए, कंबाइंड है। एक्सप्लेन आए सॉइल क्लासिफिकेशन, 7 लिख दिया। इसका नीचे देखना है 5 में जाके 4 दिए, L2 दिए, तो ये सही निकल गया। क्लैप करिए जल्दी, खत्म हो गया। ओके, आई बात समझ में?
तो आप लोग ब्लू, अगर आप बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं, क्या असेस करने वाले हैं, अगर आप नहीं समझेंगे, you cannot define your COs. Okay, you understand what you want to, how you want to assess him, whether you want him to analyze some problems or you want him to apply some concepts, you want him to understand some concepts, what all you want him to do, and at the end of it you want to check for those things. So your COs should be in line with that. Okay, otherwise everything will be going for a toss. ऐसे इधर का कुछ लिख देते, उधर कुछ, फिर बोर्ड ऑफ स्टडीज के ऊपर ब्लेम डालते, वो यूनिवर्सिटी भेज दिए, ऐसी सब उसका ही फॉल्ट है यूनिवर्सिटी का, हम थोड़ा लेटेंगे, आराम करेंगे, वो गलत करा तो हम भी वैसे ही लिख के रख देंगे, बस वैसा नहीं चलेगा. ओके, NBA will not accept that. Okay, so now where's my little thing? Yeah. सपोजिंग फॉर अस एल्गोरिथम्स का है हमारा, तो हम आपको एनालिसिस करना था, टाइम एनालिसिस करो इस पे. हाँ, but I'll give a new problem. Say, if you give that same problem, then it will be understanding problem. That's what you will know better. Supposing you taught a problem and you are asking same problem in the exam, that is also possible. Teachers are doing that. That वही problem जो क्लास में कराते टेस्ट में देते हैं, अब उन्हें उसको फिर एप्लीकेशन वो लेवल दे के दिखाते कि अप्लाई करा रहे हैं, लेकिन वो अंडरस्टैंडिंग है आपके पास, आप उतनी चेक करें. प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करके एक एक पार्ट को आप समझना क्या क्या है. एक सर्किट बनाया आप, तो सर्किट को डिस्क्राइब, सर्किट उतरा हुआ है, क्या काम करता है, फंक्शनैलिटी बताओ इसका. इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है आप, क्या है आप, इलेक्ट्रॉनिक्स है. So some circuit is given to you. Okay, you have to analyze and say what would be the output. हाँ हाँ, analyze means you have to break it up into small parts and give the result. Supposing आप पूरा सर्किट बनाए उसका, उसको बना के बोले कि एट द एंड ऑफ इट उसका एक एक्सप्रेशन दो, बुलियन एक्सप्रेशन दो, तो आप उन्हें एनालाइज करा, ये सर्किट क्या काम करा, हाफ एडर दे दिया, यहाँ पे दो नैंड गेट्स लगाए आप, वहां पे वो लगाया आप, ये सर्किट क्या काम करता, फाइनली जाके देखो तो कंपैरेटर निकलता. दैट्स एनालिसिस. He's also applying. If you want to put two levels also, it's okay. He has applied the concepts and he has also done the analysis. So if you put two also, it is fine. But you can give questions like this. देते ना अपन डिजिटल वो क्या कुछ रहता ना आप लोग का, आप पढ़ा रहे ना उसमें देते ना, एक थोड़ा लेवल बढ़ाए तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते, नहीं तो सीधा साधा क्वेश्चन पूछते. इम्प्लीमेंट नैंड यूजिंग 4 गेट्स, वो क्या 4 नैंड गेट्स इम्प्लीमेंट, XOR कुछ वैसा लेता था. हाँ, जो पढ़ाई से सर्किट देते उतना ही कर रहे हैं, वहां पे प्रॉब्लम आ रहा. हाँ हाँ, it can be two also, I'm saying, because it's applying a concept and also breaking it down into different circuits. What is the output of this? What is the output of this? Combining this output, then again, what is the result? And eventually, it turns out, if you get the expressions right, it's simply a comparison operator. What is the comparison operator? XOR or XNOR? क्या है comparison operator? XOR या XNOR? Anyway, you can think about it. Okay. Okay. ठीक है, चलो. Now writing COs. Okay. Bloom's taxonomy levels connect to learning outcomes required to answer questions in exams. Please remember this point. If you don't, why I'm stressing on Bloom's taxonomy, because it is connected. If you understand the whole process, now you can make your own syllabus better. You can make your own papers better. That's all. Okay. And if you understand the philosophy, I'm sure all of you can do it the right way. Okay. Somewhere you are lost the track. COs are measurable or observable. Okay. You can also measure. It should be measurable. Use discipline-specific competencies to define COs.
When writing course outcomes, it may be useful to use the following expression. At the end of the course, the student will be able to blah blah blah. Attaining POs requires reaching level 6 in the assessment in the curriculum. Okay, very well. So you have COs and POs. Okay, COs of the courses. Different courses will contribute and you will achieve the overall POs. Okay, you can have at most 6, it's saying. That's all. Now there's something called as objectives and outcomes. Okay, sometimes they write both objectives and outcomes. So objectives are statements of what the teacher intends for the student to learn. And this is what the student will be able to do at the end of the course. Okay, the teacher may teach many things, but not all will be examined in the exam. Okay, so some of it will be examined. So objectives and outcomes are slightly having different connotation. I have put one question paper here, but I don't know if you can all follow computer science paper. I have this paper only. I cannot discuss another paper because I am not so well versed. I don't have syllabus also from your institute. Syllabus copy bhi nahi aaya, so I couldn't. Last time she had given me something. So this is this. I can make it bigger if you want. Your objectives likhe. To introduce the concepts of computing environment, to familiarize the basic concepts, to understand modular structure. अब टीचर बोल रहे हैं कि the teacher wants to introduce this topic. The teacher wants to familiarize the students. The teacher wants students to understand, not to understand. Objective teacher लिख रहा. He wants to do this. अगर टीचर ये अंडरस्टैंड करना है तो फिर ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो हमें समझना ही पड़ेगा पढ़ाने से पहले. लेकिन he wants to impart this knowledge. He wants to teach them how to apply this concept. Okay, so it is from the teacher's point of view. So these statements to understand, to learn the usage, to learn the concepts, these are not appropriate starting words. Okay, and then they have written some outcomes. Formulate simple algorithms and translate to algorithms. Programs use C language. Implement conditional branching. How much is the time I have? I am running out of my time. 10 minutes. 10 minutes only, no? That's why I am going in hurry. But you can peacefully look at the syllabus. I put it up for you. You can see how many of you know computer science here? Many are there, few are there. I know a few people. You can understand this, no? So you look at the syllabus and see whether that outcomes are matching with that. Formulate simple algorithms and translate the algorithms to programs using C language. Implement conditional branching, iteration and arrays. उधर का चलेगा. अच्छा. Okay, iteration and arrays. उसके बाद apply the function concepts to implement searching and sorting algorithms. Analyze the usage of structures and pointer variables. अब आपका syllabus देखो आप, हर चीज कवर हो रही क्या उसमें? Sorting, searching कवर कर लिए, function concepts कवर कर लिए, conditional branching कवर कर लिए. Anything left out? Recursion is not covered. अभी recursion आ रहा नीचे. Recursion है, pointers है नीचे. हाँ, recursion और pointers और file handling. File handling में नहीं है. तो ऐसा आप लोग बना दिए, लेकिन आप overlook करें थोड़ी चीज़ें. Well, you study this carefully. What are the you can do a small exercise. क्या problems है CO से, अब आप समझ गए ना क्या है? आप क्वेश्चन पेपर इस पे सेट करें, कैसा करें सेट, वो देख सकते हैं आप. ये एक दूसरा मैं बता रही हूँ. Another university पर has said this thing. Course objectives to facilitate the learners to learn the fundamentals of something. तो टीचर का ये है काम. He wants or she wants to facilitate the student to learn to do this. So objectives have to be written something like this from the teacher's point of view. Course outcomes, by taking this course the learner will be able to blah blah blah. अब इसके course outcomes देखिए और इसका syllabus देखिए आप. Okay, does it match properly?
वो पूरा सिलेबस भी दिखना उनको। एक इसमें गुम आपको सिलेबस पर वो दोनों नहीं दिख रहे हैं, तो एक छोटा एक्सरसाइज है। आफ्टर लंच यू आर हैविंग समथिंग, आई एम टोल्ड, नो, सम सेशन, so in that session you can make them look and give some comments on this. Okay, what is their feedback on these two syllabus, which is good, which is not good. Okay, you can take that as an exercise. पूरी ओबी की फिलॉसफी शुरू में जो बोले थे हम लोग, स्टार्ट ऑफ किए थे, वही है ये। पहले प्लान करना, करिकुलम को प्लान करना, आप लोग उसको डू इम्प्लीमेंट करना, कोर्स डिलीवरी असेसमेंट कर लेना, चेक करना, अटेनमेंट, सर्वे एनालिसिस, एकेडमिक ऑडिट। हो रहे नहीं हो रहे, एकेडमिक ऑडिट नहीं हो रहे, वो तो दिख रहा। तो ये सब चेक करना, फिर उसके बाद एक्ट करना। एक्ट क्या करेंगे? कंटिन्यूस मॉनिटरिंग ऑफ आउटकम्स। फिर वापस जाना, करिकुलम डिजाइन को चेंज करना। कौन करेंगे करिकुलम डिजाइन चेंज? आप वहां पे लिखना लेटर, आपको ये जब पढ़ाए आपको दिक्कतें हुई, ये सही नहीं है, गैप्स क्या है, आपका आउटकम सही नहीं लिखे, वो नहीं लिखे, फिर उसको चेंज करना। तो इट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। सो दिस एंटायर थिंग मेक्स अप ओबी, which is starting off from planning and in the end closing the whole loop by continuous improvement. Okay. Well, these are all some things else. I won't talk about attainment and all this now. There's no time. But she was telling me about COPO. This is also a small slide. What I'll do is to do COPO mapping now. You can do a little bit, I think. You know what is understand, what is analyze. समझ में आ रहा? तो आपके अब जैसा यहाँ अप्लाई कॉन्सेप्ट्स ऑफ, ये थोड़ा मैग्नीफाई होता है कि नहीं होता कि स्लाइड शो में डाली हूँ, लेकिन ये स्लाइड ही आई कॉपीड फ्रॉम मुरली कृष्णा, मुथु कृष्णा की स्लाइड, वो छोटी है थी तो मैं उसका एक्सपैंड नहीं कर सकी। ओके, और CO1 है अप्लाई कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिस्ट ADT इन लीनियर एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स, but that one task is broken down into some smaller tasks. Basic concepts of data structures introduced, problems for which lists are used will be discussed, solutions using list ADT, implementation analysis will be there, use of list ADT in various requirements will be evaluated, programs to implement solutions will be taught. You have to break down that into smaller things, okay? And then you must, because your POs are there, it falls under each of those POs. You can go back to the PO list if you don't remember, okay? And then you can say how much time you spend on the concepts, how much is that important with PO1, 2, 3, you're having more weightage on 3. Solutions, you want him to actually build solutions with that. Concepts bolne ke baad, you should be able to solve problems based on that. Application is more important to you. So 3 लिखे वहाँ पे, फिर 1 use of useless in various other requirements, implement solutions, programming करा रहे हैं, implement भी करा रहे हैं, तो उसको 2 करना। अगर नहीं करा रहे हैं आप implementation, तो उसको 0 रखिए, आपकी मर्जी। तो एक टॉपिक लीजिए, उसको टेयर अपार्ट करिए, whatever you are doing, and then you try to give the points, and the exam also you will ask accordingly. Okay, that's the whole idea. So that's what I wanted to say. इसके नेक्स्ट स्लाइड भी वही कंटिन्यूटी है, इम्प्लीमेंट ग्राफ ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग का दिया नेक्स्ट है, उसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं, फिर आप चेक कर लो उसको। मैं 2-3 चीज़ और बोल के चले जाऊंगी आपको। ये एक और एक वर्कशॉप अगर होगा तो आपको फिर इंशाल्लाह वी कैन टॉक अबाउट दिस। देयर इज अ न्यू थिंग नाउ, दे टॉकिंग अबाउट नॉलेज एंड एटीट्यूड प्रोफाइल्स। आई एम नॉट गोइंग टू दिस, but this is something new which has come up now, okay? And your program outcomes are not now being mapped to these WKs, WK1 to WK4 and things like that, okay? So थोड़ा बहुत रिविजन हो रहा है, but at least पहले वाला आप समझ गए अगर, तो इसको एक्सटेंड करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, okay? So I'm just leaving you at the thought के there are still some more changes which have happened now, and you have to work with these now for the coming year, coming third after 3 years or whatever, okay? So we'll have to discuss this at length. I'm not getting into that now. I just will show you the website once again because I love to do that. You may not need me at all. If you just follow the websites, it will tell it all.
ये NBA की वेबसाइट है. In this website, you please go to the last tab, workshops वाला tab में. ये लोग continuously, they are very good. They are giving entire literature there. So they will be doing awareness workshops and orientation workshops continuously. Awareness workshops with, यहाँ पे जाके आप क्लिक करिए. ये वर्कशॉप्स हुए हैं. अभी निटर में भोपाल में एक प्रोग्राम हुआ है 20 जनवरी 2025. तो इसमें लेटेस्ट डिस्कशन हुआ है जो मैं बोल रही हूँ, चेंज आए हैं. इसमें आपको पूरे स्लाइड्स के साथ ये प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे, यू विल गेट द स्लाइड्स आल्सो, पीपीटीज उसके यहाँ पे आ जाएंगे. पूरा इन्फॉर्मेशन है इस पे. वैसे भी जो भी आपको डॉक्यूमेंट चाहिए वो आपको मिलता जाएगा उस पर, एनबीए के वेबसाइट पे. वो सार कैसा है, वो क्या है, सब चीज खोल के देख सकते हैं आप. ऐसे अन्ना यूनिवर्सिटी वाले किए प्रोग्राम, वो उसका अपलोड हो गया. अलग से ओरिएंटेशन वर्कशॉप्स हैं. इफ यू आर असेसर्स, then you can go to the orientation workshops. For assessors also there are different programs, okay, who do assess. You can, good to see how they assess. If you are not an assessor also, you can see these PPTs, so you know how, what the assessor is doing, how he is handling. So NBA is very very good at providing all the material, so they expect a lot from you. So I just wanted to leave you with this, that even if nobody comes and you're doing any work, this is the place to find information. So open for questions, or you want to say tata bye bye? Anybody questions? हाँ बोलिए. When they sent us the task to set a question paper, Right. they give us guidelines. Right. So in some of the guidelines, they already mentioned that 10 marks should be allotted to L6 or to L5. So such specifications are given, and when it comes to certain subjects, it is not possible. And we have also seen that. I mean, like at max, when we can reach L4. So what do you do? So I just contact them, but then whatever is possible. So suppose You reject reject such requests. If they want to do you to do something wrong, because it's not तो possible. wrong काम करना है हमको. L6 is impossible. I mean, like I आप teach. रिजेक्ट करना है आउटराइट. ये L6 होता ही नहीं. आप प्रोजेक्ट करा के से कराना था, कराए नहीं कराए, क्या कर रहे हैं आप उनसे बातचीत करिए. अगर एग्री नहीं कर रहे हैं ना, I mailed. I spoke to the. you can't become wrong. Wrong. That is. आप अगर L6 बना के उसको दे रहे हैं, 1 घंटे में सॉल्व करो बोल रहे हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं, 1 घंटे में प्रोजेक्ट कर सकते हैं. मैम, and plainly speaking, मैडम आपको जो समझ में आया, that's समझ में आए तो फिर आप उसको बदल देना. अगर नहीं बदलो बोले ना, वापिस. हाँ हाँ. Generally we are doing it, nothing is there. Generally we are doing with the internal marks, but when we are not able to use the external marks for analysis of attainment of zeros. And the other thing is, presently the university results that are coming, they are not specifying the marks, they are specifying the grades. So how do we do the analysis or the attainment of zeros? That is a big problem for people who are not from getting autonomy. Why are you not getting autonomy? You're such a old fellow. I'm really shocked. क्यों ऐसे? Autonomy लेना चाहिए, क्योंकि आपकी faculty has to grow, no? जब भी उनको आज़ादी मिलेगी, they'll feel good working with you. Because उसको freedom नहीं देता, syllabus define कर रहा है, वो जो define करके दिए, वो रो रहे हैं मैडम की, वो CO हमको ऐसे दे दिया, जो बोले हम सुनना पड़ा. कुछ सुनना तो नहीं पड़ता, लेकिन वो हेडेक है आपको वो फिर आपको अपना रिवर्स इंजीनियरिंग करना पड़ता, वो पेपर ला के फिर देखना पड़ता. फिर इफ यू वांट यू कैन राइट टू द यूनिवर्सिटी, क्या वी आर गोइंग थ्रू एनबीए, आई वांट दैट डिटेल थिंग, एंड द यूनिवर्सिटी में oblige not oblige, that's another question. So the entire process has to be followed, because we are going for NBA, we want to do this, and we are looking for the scripts, marks, whatever. You have to write. In case they oblige, very good. Say no, we don't give. Then that letter you can show to NBA. We wrote to university to give this so that we can evaluate. NBA, we have not got this. So we are based on sessional marks. NBA will be happy that you have done the communication, you have tried your level best to do that job, but it did not happen. So NBA looks for only proofs that did you think that it was required. If it was required, what did you do? Did you really take a step towards that? That's all. And one more thing, in the courses we have specified course objectives and course outcomes. Yes.
how do you differentiate those two? आप टीचर है ना, आप जाएंगे तो आप क्या क्या बोलना चाह रहे हैं उसको, बहुत सारी चीजें बोलने। ये बहुत सारे बोलना चाह रहे हैं। I want the student to learn all those things ना। हाँ, अब लेकिन मैं घर जाती हूँ, मैं A to Z पढ़ाना चाह रही हूँ, लेकिन एट द एंड मैं बोल रही हूँ कि उसको आधे तक भी आए तो मैं उसको पास करने वाली हूँ, समझे ना आप? No, because for the same syllabus we are framing the objectives. So for the same syllabus, Yeah. we want the student to learn. So you can teach more than the student will just be evaluated on. Course outcome is what he is evaluated on. वही समझे मैं ब्लूम टैक्सोनॉमी में, उसको उतने पे आप इवेल्युएट करेंगे वही चीजों पे, लेकिन उससे बढ़ के भी आप पढ़ा सकते हो उसको। You mean to say the course objective is beyond the syllabus? Yes, it can go beyond. अब बच्चों को मैं बोले ना 1 to 50 सिखा रही हूँ क्लास में, कुछ बच्चे सीख रहे हैं कुछ नहीं सीखते, लेकिन 20 तक भी आ गया ना बच्चों को, There is course outcome. तो आउटकम है कि बस मैं 20 तक तो आना चाहिए, ऐसा है। तो टीचर के एज ए टीचर आई वुड लव टू गिव सो मच नॉलेज, बिकॉज जब नॉलेज रहती है तो इंसान शेयर करना चाहता है, तो जब शेयर करना चाहता है तो ज्यादा ही तो बोलना चाहता है, तो ऐसे कुछ कर सकते हैं आप लोग। Thank you. थैंक यू। Thank you. Anybody? Any questions? Yes, anybody? Any questions? Or we shall. Ma'am, take them. No, it has to be recorded. We are modifying certain outcomes, ma'am. Does that should be reflected in the syllabus copy or In your copy you should reflect, and you should write to the Board of Studies of the university saying that these outcomes are not in tune with what the syllabus is. So we have slightly modified and we request you to incorporate the changes so we in need the to coming. even get modified the syllabus also if we are modifying the outcomes. If we are writing our own outcomes, we need to even modify the syllabus. See, you Syllabus want to modify outcomes as per the syllabus, or you're saying you want to add new outcomes? We want to add certain new outcomes, then what is the procedure? You can add new outcomes also, and you can evaluate in your mid-semester. Okay? But that can't be But reflected. final exam you cannot do that because you don't have autonomy. That's what I'm saying. You should get autonomy. So as far as final exam is concerned, only that questions will be asked within the syllabus. If you want to give more information than that, you can do in the mid semesters by giving project, by doing this. You can certainly do that, and you can tell NBA we have done like this because we have no power over that. Our college has not yet got the autonomy. So at least at my level, I'm doing this. They'll be happy. Madam, in NBA criteria too, we have curriculum gaps. So what is the procedure to design curriculum gaps? Is it any limitations, number of curriculum gaps you have to keep? 4, 5, 6? कितने criteria हैं? 7 NBA में? criteria. 7. 7 criteria हैं. Yeah. तो ये 7 criteria जो है, इसमें से कौन से हैं criteria जिसमें आपका attainment calculate करते हैं आप? जी. कौन से criteria? CO attainment, PO attainment calculate करते हैं आप? Yes, yes. 3. हाँ, 3 में attainment करते हैं. तो आप एक कुछ टारगेट सेट करते ना, इतना अटेन करूंगा, Yes, 3. तो उतना अटेन हुआ नहीं हुआ, Okay. तो उससे आपको एक गैप फिट हो सकता है। दूसरी चीज होती है आपकी ऑडिटिंग होती है। ऑडिटिंग होने पे मालूम होता है कि आप कहाँ कहाँ आपके गैप्स हैं। ऑडिटिंग की जो रिपोर्ट आती है उससे आपको मालूम हो जाता है कि आपके गैप्स कहाँ हैं, वो गैप्स को क्लोज करेंगे आप। Okay. तो these are the various places in 7th criteria. They spell out specifically what gaps to be identified. Yes, ma'am. So they identifying gaps through audits and through your attainment calculations. Okay. And if you have not achieved, then what corrective action have you taken in the past? Because when they come, it is the past. सिलेबस में अगर गैप है ना, वही आप अगर आपकी ऑडिटिंग हो गई तो देख रहे हैं कि आप लोग सिलेबस मॉडिफाई करते जा रहे हैं क्योंकि आपको सही नहीं दिख रहा, तो आप वो लिख रहे हैं, तो वो ऑडिटर जो आपका ऑडिट करेगा वो बोलेगा कि ये हमेशा मॉडिफाई करी सिलेबस, मतलब सिलेबस सही नहीं है, देन यू राइट अ लेटर टू द यूनिवर्सिटी, सो योर कॉलेज अथॉरिटीज विल डू द ऑडिटिंग, come to a conclusion, they'll write a note there that syllabus is not good, our faculty have reported this, they are modifying it regularly, hence we need to write to the university, and your college will write to the university, your dean or For whatever. example, कोई एक elective हम लेके आ रहे हैं, हाँ, can that be depicted as a gap and then that elective be brought into the curriculum?
But elective you cannot add, as I understand from the university's curriculum, because you don't have autonomy. But you can add topics within that elective. Okay, and you can do midterm evaluations based on that added topics. But final exam paper will only be in their hands. You can add projects, okay, extra mini projects, okay, and maybe you don't have any credits for that, but like audit, do these things. So those things you can do. Gaps that have to be defined are limited, or What do you mean by number of gaps? I don't understand. in the curricular gaps, we list out gap 1, gap 2, and so on. So, is Ah, there any like threshold given that only no, 5 gaps should be mentioned or 4 gaps should be mentioned? not at all. Wherever your attainment is not there, okay, Okay. आप बोले हैं उसको एनालिसिस करना सिखा दूंगी, स्कोर नहीं आया उतना, एनालाइज नहीं कर सक रहे बच्चे, तो एनालिसिस पे कमजोर हैं. आपके पास मैथलैब सॉफ्टवेयर टूल नहीं खरीदे, आप जाके आपको दिए तो एनालिसिस कराती मैं, फिर आपके हेड को बोलते हूँ जाके बोलते मैथलैब खरीदो भाई, एनालिसिस नहीं करा सक रहे हैं, इनके सिलेबस जिसमें एनालिसिस है उसको करने के लिए मैथलैब होना उन लोगों को, तो मैथलैब तो है ही नहीं, तो खरीदो, वो टूल नहीं है, टूल खरीदो. तो इस तरह से आपका वो गैप बंद होगा. यू हैव टू बी वेरी ऑब्जर्वेंट. इफ यू वांट समथिंग, हाँ अटेनमेंट में आप सीओ लिख दिए, मैं ये अब एक तो आपका सॉफ्टवेयर नहीं था उसके लिए आप नहीं करा सकते हैं बोल रहे हैं, यूनिवर्सिटी लिख दी थी वैसा, लेकिन आपके पास टूल ही नहीं था, सॉफ्टवेयर नहीं खरीदे आप लोग, तो आपका वो गैप हो गया. नहीं, आप अटेनमेंट लिखे थे कि मैं एनालिसिस का मैथलैब भी है, सब है, फिर भी आपको नहीं हो रहा, मतलब आप ट्यूटोरियल क्लास जोड़िए उसमें. Students need some more classes to do analysis. So although university has not put a tutorial class, you introduce a tutorial class there, where you will make him practice more. You have that privilege, isn't it? You can introduce your tutorial class. I am working for Anurag University now. They will introduce so many classes. They won't let the students move at all. वो भी headache है एक तरह का, मगर Gaps are something where I map my syllabus to the POs, and then we see which POs are inappropriately mapped or less mapped. Then we identify gaps and list it out, like PO8, it is ethics. We don't have any subject as per OU syllabus in ethics, so we identify that as a curricular gap. बट जैसा कि आप बोल रहे हैं कि हम अटेनमेंट देखते और फिर हम गैप्स वो करते, सो व्हाट इज द करेक्ट वे टू मैप द सिलेबस टू द पीओस और टू लुक इनटू द अटेनमेंट्स? very good question. She is having a problem which is a very common problem. एथिक्स है, यूनिवर्सिटी बोल रही है एथिक्स के लिए कोई इवैल्यूएशन नहीं है उसमें. कब बोली यूनिवर्सिटी ऐसा? देखिए कहीं एथिक्स को इवैल्यूएट नहीं करो बोली. We don't have it as a एथिक्स syllabus. सब्जेक्ट जरूरी नहीं है. No, we like एथिक्स क्या है? व्हाट इज एथिक्स? व्हाट इज अकॉर्डिंग टू यू? no. My this thing was like we what do I say? We exhibit, the students exhibit ethics while doing projects, while doing assignments. On that we evaluate it. You Then evaluate yeah, based because on that. we check because if the assignments are copied, not copied, and So then you we do try, that. yeah, we do that. University doesn't stop you from doing that. Yeah. Okay. Yeah. So it is in your control. Yeah. So wherever it is in your control, do it. You will not necessarily that you should have a subject. If you think you need a subject also, you can do it as a workshop, as a additional subject, audit subject. You can do that if you feel that necessity. एक ऑडिट कोर्स है. एथिक्स का इवैल्यूएशन होना. इवैल्यूएशन इसी तरह से होगा जिस तरह से मैडम अभी समझाए कि मैं करती हूँ, मैं उसको चीटिंग नहीं करने देती हूँ, कॉपी हो गया तो उसको रिजेक्ट करती हूँ. उसका प्रूफ भी रखना पड़ता है. प्रूफ रखते ना मैडम, नहीं रखेंगे तो फिर बच्चा मार्क्स नहीं मांगेगा. बोलेगा मैं असाइनमेंट दिया था मैडम ने दिए, तो ये बताएगी 4 पेपर से मांगे मेरे पास, सबको 0 दी मैं. प्रूफ नहीं तो एनबीए कौन एक्सेप्ट करेगा? स्टूडेंट एक्सेप्ट करेगा ना एनबीए एक्सेप्ट करेगा.
मैडम रूल बनाए ना पहले जी. Algorithm reports means what? Plagiarism report. When they do projects, you can do a plagiarism report. Turn it in है आपके पास या कोई दूसरा सॉफ्टवेयर है आप प्रोजेक्ट जब सबमिट करते हो वो देना पड़ता है. Very good. That normally every college is doing that. They check the projects. So to evaluate a PO, it's not necessary that a subject should be there to map it. Not necessary. Not necessary. Communication skill subject जरूरी नहीं है. क्लास में आप उसको सेमिनार दो बोल दे रहे हैं. उसका कम्युनिकेशन स्किल आप असेस कर रहे हैं. क्लास पार्टिसिपेशन इसीलिए तो हम ज्यादा फ्रीडम मांग रहे हैं. एक्चुअली आपको क्या कितना परसेंटेज मार्क्स आपका इंटरनल के लिए 30 और वहां 70 है. वो उल्टा होना चाहिए. 70 आपके हाथ में रहना चाहिए. 30 यूनिवर्सिटी के हाथ में रहना चाहिए. होते होते आप पूरा आपके हाथ में रहना चाहिए कंट्रोल. और आप ही 100% IIT वाले 100% अपने हाथ में रखते हैं. उठो बोलते उठते, बैठो बोलते बैठते ना. उन लोगों को जो असाइनमेंट दिया वो करना ही करना है. नहीं करे तो चोरी करे तो और गलत करे तो वो असाइनमेंट भी ऐसे ही बनाते हैं कि वो लोग कॉपी नहीं कर सकते. डिस्कशन कर सकते हैं. डिस्कशन इज अलाउड बट यू कैन रेप्लिकेट समथिंग. Okay, so that freedom you don't have because of these problems. No autonomy. Then if you get autonomy, how will you utilize that autonomy? How far you want to go? You want to have more control means now you can do in a smaller 30% or 50, कितना है वो 30% बोले ना 30% में आप एक्सरसाइज कर सकते हो. Like since we don't have control of external marks in our hand, in the CO analysis part, एक direct assessment है, एक indirect assessment है. So can we take more this thing weightage to our direct assessment? 60% हम direct लेके जिसमें लेते हैं हम लोग, उसमें हम दो है, एक है semester end exams and continuous internal evaluation. So can we give more weightage to our continuous internal evaluation and less weightage to our semester end exam, since See. that is not in our control? Yeah, you can do that. Certainly you can do that. But if you draw a correlation and you see that you are giving 20 on 20 in continuous internal evaluation and semester end exam he is getting only 20%. Okay, so then anybody would raise eyebrows. Okay, but if you are seeing that they are consistent marks and here you have more things to look upon, then you can always do that. But supposing if you are doing this and if the correlation is too bad, then people may raise eyebrows. So you have to be watchful because they will check our ethics also, NBA people. समझे ना. आप वहां बैठे तो आप क्या करेंगे वही करेंगे वो लोग. अब थोड़े बहुत वैसे ऐसे भी रहते हैं मगर जनरली. Okay, thank you very much. Yeah, thank you, ma'am. My pleasure. On behalf of the college, the ICSC, and all the faculty members, I thank you profusely, ma'am. It was really a very eye-opening, informative, interactive session, and we did, no doubt, due to our conveyance problem, 45 minutes of yours was curtailed. First of all, I should thank Maniza and the college authorities for giving me this opportunity of talking to you all. I love coming back to MJ every time because from the beginning I'm associated with MJ and she's done a lot of work for me. Whatever information I ask, she provides me. So God bless you. Helps. Everybody is helpful. Thank you. Yeah, of course, with the help of everybody. Thank you very much. And inshallah, we will carry forward what we learned, what mistakes, and will be more, observant and critical in our framings. Right. Thank you.